Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to do constructed response questions. Chapter number 4. Question number 1. Statement देखें. When will you say that a force is conservative? Give two conditions. आप कब कहेंगे कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है? आप इसकी दो कंडीशंस बताएं. तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने पढ़ा हुआ है. दो इसकी कंडीशन है. नंबर 1, वर्क डन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. काम का इन्हिसार रास्ते के ऊपर नहीं होना चाहिए. और दूसरी, वर्क डन अलोंग अ क्लोज लूप शुड बी जीरो. के क्लोज लूप में यानी जहाँ से बॉडी को उठाएं आप दोबारा उसे वहीं पर लेके आएँ, तो ऐसी सूरत में टोटल वर्क डन शुड बी जीरो. सो दीज आर दी टू कंडीशंस फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स. Let's write. A force is conservative is said to be conservative if number 1, ये दो conditions, work done by the force is independent of path followed. A force is said to be conservative if number 1, work done by the force is independent of path followed. Number 2, work done along a closed loop is zero. Work done along a closed loop. Closed loop में काम zero हो is zero. These are the two conditions for a force to be conservative. किसी फोर्स के कंजर्वेटिव होने के लिए ये दो कंडीशंस हैं. 4.2 स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए और समझिए. A light and a heavy body have same linear momentum. एक लाइट और एक हैवी बॉडी दोनों का मोमेंटम सेम है. Which one has greater kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv². इसको मोमेंटम की शक्ल में लाने के लिए 1/2 m² v²/m. ये क्या किया है, हमने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया है और m से डिवाइड कर दिया गया है. अब ये m² और v² जो है ये मोमेंटम का स्क्वायर बन गया है. ये मोमेंटम का स्क्वायर बन गया है एंड दिस इज इक्वल टू p²/2m बिकॉज mv इज इक्वल टू ये मोमेंटम. अब इसमें देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. काइनेटिक एनर्जी इज inversely proportional to m. So if the momentum is same, then the lighter body will have greater kinetic energy. So if
the momentum of both bodies is same जिसका मास कम होगा, the lighter body will have greater kinetic energy. तो लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आंसर इज कंप्लीट। 4.3 A motorcycle is running with constant speed. एक मोटरसाइकिल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, भाग रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर। इज एनी वर्क बीइंग डन ऑन द मोटरसाइकिल? क्या मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है? इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, अगर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। आप लोग जानते हैं कि वर्क is the dot product of force and displacement. If there is no net force, there is no work done. मोटरसाइकिलिस्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, और आगे उसने भी बता दिया कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, लिहाजा देयर विल बी नो वर्क डन ऑन इट। द मोटरसाइकिल is running with constant speed. No net force, no net force is acting on it. So there is no work done. So there is no work done. W is equal to F dot D. F d cos theta if F is 0, W is equal to 0, d cos theta 0. There is no work done if there is no force acting upon it. 4.4 A force acting on a ball moving with 14 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल के ऊपर फोर्स अमल कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है, 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड, एंड ब्रिंग इट्स स्पीड टू 6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड को 6 मीटर पर सेकेंड पर ले आती है। हैज़ द फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क? एक्सप्लेन योर आंसर। क्या फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है या नेगेटिव वर्क किया है? देखें, इनिशियल स्पीड उसकी 14 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल स्पीड उसकी 6 मीटर पर सेकेंड है। दिस मीन्स स्पीड कम हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, और फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द मोशन एक्ट कर रही है। दिस मीन्स वर्क डन इज नेगेटिव। Vi
14 meter per second, VF 6 meter per second. There is negative acceleration. Force is acting opposite. To motion, work done is negative. Work done is negative. मैथमेटिकली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. थीटा 180, W is equal to FD cos theta, FD cos 180 minus 1. This is minus FD. तो ऐसी सूरत में वर्क डन विल बी नेगेटिव. 4.5. A slow moving truck can have more kinetic energy than a fast moving car. How is this possible? एक स्लो मूविंग ट्रक जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट मूविंग कार से ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा हो सकती है. क्या ऐसा पॉसिबल है? अ स्लो मूविंग ट्रक कैन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. एक आहिस्ता से चलने वाला ट्रक उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है दैन अ फास्ट मूविंग कार, एक तेज़ रफ्तार कार की निस्बत. हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे मुमकिन है? ये देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू 1/2 mv square. Depends upon mass of the body and square of the velocity. अगर mass की magnitude यानी numerical value of the mass that is greater than square of numerical value of velocity, then the kinetic energy of the truck, heavy body, that will be greater than the kinetic energy of the car moving with greater velocity. If mass of truck has more या greater numerical value of square of numerical value of velocity of car, then the truck will have more kinetic energy. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट कि मास ऑफ द ट्रक, ये लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, ये आंसर कंप्लीट है. मास ऑफ ट्रक
that is 10,000 kilogram, or velocity of the truck maybe 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड बनाएं तो ये बनेंगे 20, 1000, कुछ इस तरह से। तो ये देखें, ये 2 सिफर इसके साथ कट जाएंगे, ये 200 ओवर 36, 100 ओवर 18, 50, तो ये कितने बनेंगी? ऑलमोस्ट राउंड कर लीजिए इसको, 5.6 मीटर पर सेकंड इसको कर लीजिए ये। और दूसरी तरफ कार, मैस ऑफ कार, इसको आप M2 कह लें, 1000 kg एंड वेलोसिटी V2 लेट इट बी, उससे ज़्यादा 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये बनेंगी 50, 1000 डिवाइडेड बाई 3600, उसी तरह से कीजिए, ये 2 सिफर इसके साथ कट गए, 18, 5, 25, ये कितने बन गए? 125 ओवर 9। कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बनेंगे तकरीबन कितने मीटर पर सेकंड। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 1000, 5.6 का स्क्वायर। अगर इजाज़त दें तो मैं 6 का स्क्वायर ही कर लेता हूँ, ठीक है ना, डेट इट 6। तो ये बनेंगी, ये देखें, 1/2 इंटू 1036, ये 18,000 जूल बनती है जी ट्रक की काइनेटिक एनर्जी। और कार की काइनेटिक एनर्जी कार लिख लें 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 ये 1000 एंड v का स्क्वायर, ये v है जी इसकी 14 दार, 196। तो ये देखिए, this becomes 98,000 जॉल। ये तो कार की ज़्यादा बन गई है। ये हमने 1000 लिख दिया है। Kinetic energy of the truck 1/2 into mass of the truck 10,000
v का स्क्वायर 5.6 स्क्वायर, तो इसको मैं 6 कर लेता हूँ राउंड करके, लेट इट बी 6 स्क्वायर. So this becomes 1/2 10,000 36 18. ये देखिए 18 0 0 0 1,80,000 जॉल कितनी बनती है जी काइनेटिक एनर्जी ट्रक की. और कार की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². इसमें वैल्यूज पुट कीजिए. ये 1000 है, v². 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 बनेगा. $98,000. This is 1,80,000. This is 98,000. This means kinetic energy of the truck is greater than kinetic energy of the car. लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट टू मेक यू क्लियर. तो आप शॉर्ट आंसर के जवाब में सिर्फ इतना ही लिखेंगे. नाउ 4.6. Why work done against friction is non-conservative in nature? Explain briefly कि work done by friction जो है that is non-conservative. तो ये force of friction हमने पढ़ा था, ये non-conservative force है क्योंकि इसमें work done जो है that depends upon the length of the path. Frictional force is non-conservative. It acts opposite to motion. It acts opposite to motion and depends upon length of path. जितना रास्ता ज़्यादा लंबा होगा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी. सो इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव में independent of the path of the motion. It acts opposite to motion and depends upon length of the path. So work done by it is not independent of path. Therefore, frictional force is a non-conservative. Frictional force is a non-conservative. Four point seven. इसको दोबारा देख लें.
frictional force is non-conservative. It acts opposite to the motion and depends upon length of the path. रास्ते पर डिपेंड करती है। जब फ्रिक्शन रास्ते पर डिपेंड करती है तो वर्क डन बाई इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो इसका किए हुए काम भी रास्ते से इंडिपेंडेंट नहीं, रास्ते पे डिपेंड करता है। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। 4.7 डज विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन। क्या हवा के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, एक्सप्लेन करें। तो विंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास भी होता है और वो मूव भी करते हैं। तो इसका मतलब कि विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। यस, विंड हैज काइनेटिक एनर्जी, ये इसका आंसर होगा। आगे रीजन दें। बिकॉज wind molecules have mass and also they are in motion, and also they are in motion. So it has काइनेटिक एनर्जी। आप लोग जानते हैं कि हवा का वजन भी होता है और ये मूव भी करती है। तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वजन भी होता है, जिनका मास भी होता है और ये इन मोशन में भी होते हैं। तो जब किसी चीज़ का मास भी हो और ये मूव भी कर रही हो तो इसका मतलब इट इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो डियर, इसके साथ ही हमारे ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ख़त्म हुए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।